हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे का टॉपिक। ठीक है, ये फिलोसफिकल ऐसे है। ठीक है, बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। ठीक है, हम लोग के पास 100 चैलेंज हो रहा है। ठीक है, बीपीएससी मेंस निकालने का। ठीक है, बीपीएससी मेंस हम लोग को निकालना है 100 डेज में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉलिटिकल ये एक फिलोसफिकल ऐसे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि तुम्हारा कि पॉलिटिकल विल एंड द नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ऐसे लिखना है, पॉलिटिकल विल और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है पॉलिटिकल विल? रेफर्स टू द फॉर्म determinations of leaders and governments to prioritize, implement, and sustain policies despite challenges such as domestic opposition and limited resources and external pressure। challenges के बावजूद वो प्रायोरिटाइज करना रहता है अपना मतलब कि सिक्योरिटी। ठीक है, प्रायोरिटाइज, इम्प्लीमेंट एंड सस्टेन पॉलिटिकल policies despite challenges such as domestic opposition, limited resources and external pressure। national security encompasses, ठीक है, encompasses the protection of nation's sovereignty, territorial integrity, economic stability, and safety of its citizens for both internal and external threats, ranging from military aggressions and cyber attack uh, to terrorism, economic to terrorism। ठीक है, ये सबको टैकल करना हम लोग को। कहाँ? मिलिट्री एग्रेशंस, ठीक है, साइबर अटैक, टेररिज्म, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन एंड इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। ठीक है, फॉर फ्रॉम एंशिएंट strategic thoughts to contemporary geographical, the link between the political will and the national security has been evidence। ठीक है, एक तो सुजू था इन द आर्ट ऑफ वॉर एंड कौटिल्य इन अर्थशास्त्र stress the role of decisive leaderships in safeguarding the state interest। In modern India, the firm response to the 2020 Galwan Valley clash, where the government accelerated border infrastructure projects, demonstrated demonstrated how how political will translate into tangible security measures। ठीक है, तो गलवान वैली के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर एक्सेलरेट कर दिया। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है पॉलिटिकल विल translates into the tangible security measures। Without such resolve, even the most sophisticated securities strategies risks remain unimplemented, leaving the national vulnerable। Political will is the foundation upon which national security architecture is built। It enables timely decision making, policies formulations, and resource allocation। For example, India's steadily increasing defense budget for 5.94 lakh crore in 2023-2024 signals a strengthened commitment to
modernizations डिस्पाइट इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट तो है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना डिफेंस बजट कम नहीं करते हैं, उसको बढ़ाते ही अच्छे खासा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है कि हम लोग को अपना डिफेंस अच्छा रखना है। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS has improved tri-service coordinations while participations in multilateral platforms like Quad, I2U2 reflects strategic clarity in addressing regional threats. Historical uh, precedent affirms that the decisive impact of political will in 1971 Indo-Pak War. Prime Minister Indira Gandhi leadership not only led to the creation of Bangladesh but also reshaped South Asia geography and geopolitics in India's favor. Similarly, the United States shift institutional overhaul after 9/11, including establishment of Department of Homeland Securities, shows how political determinations can redefine security strategy. Political will also mobilize national sentiments. India's vocal for local and Atmanirbhar Bharat initiatives in the defense manufacturing have both strategic and psychological का spelling देख लो, PHY CHOLLOGICAL psychological, PHYCHOLOGICAL psychological. Psychological values reducing dependency on imports while boosting public कॉन्फिडेंस इन इंडिजिनस कैपेसिटी। ठीक है, ये बूस्ट करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इंडिजिनस कैपेसिटी। मोर ओवर strong political resolve act as deterrent, signaling to adversaries such as China or Pakistan that aggressions will meet decisive retaliation, decisive retaliation, RETALIATION retaliations. The 21st century's security landscapes is marked by hybrid warfare, cyber threats, terrorism, and mm, terrorism and climate-induced instability. Addressing the demand a blend of technology preparedness, diplomatic engagement, and resilience building, none of which can succeed without sustained political will. India 2019 Palakot airstrike following the Pulwama terror attack demonstrate a zero tolerance following the Pulwama terror attack demonstrate a zero tolerance policy towards cross-border terrorism. The decision was politically risky but strategically necessary, reinforcing deterrence credibilities. Likewise, Atmanirbhar Bharat missions launched in 2020 aim global support chain disruptions reflects a conscious policies shift towards self-reliance in defense productions. Globally, China under Xi Jinping
has advanced a comprehensive national securities framework integrating multilateral framework integrating military strength, economic resilience, and technological innovations. By contrast of 1962 Sino-India War served as a warning of consequences of inadequate political will and strategic foresight. Prime Minister Nehru reluctance to strengthen defense mm, preparedness before the conflict results in territorial losses that continue to have strategic implications. जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू का जो रिलेक्टेंस था टू स्ट्रेंथन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट इन टेरिटोरियल लॉस हुआ, ठीक है, लॉसेस दैट कंटिन्यू टू हैव स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन अभी भी है, ठीक है. व्हेन पॉलिटिकल विल इज एब्सेंस और इनकंसिस्टेंट, national security suffers. Bureaucracy, bureaucratic inertia, corruptions, and uh, partisan partitions division delay critical decisions. The Beaufort जो बोफोर्ड आर्टिलरी का जो स्कैम हुआ था, द बोफोर्ड scandals of late 1980s stall artillery ARTELLERY artillery 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 modernization, जो कि स्टॉल कर दिया था, मतलब रोक दिया था आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन फॉर ईयर्स. While political controversy over Agnipath recruitment schemes illustrate how lack of can erode consensus. Lack of consensus, consensus can erode military preparedness. Internationally, Pakistan wavering stance on terrorism, oscillating between crackdown and covert support has undermined its credibilities and invited external pressures from bodies like Financial Action Task Force FATF. Such example shows that without consistent political resolve, even when equipped states can find themselves strategically concerned. To ensure enduring political commitment, India must adopt structural and cultural reforms. नंबर वन, कौन कौन सा रिफॉर्म लानी चाहिए? इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट, जैसे कि स्ट्रेंथन द नेशनल सिक्योरिटीज काउंसिल, strengthen the National Security Council, Secretariat and Defense Planning Committees for better in inter-agencies coordinations, ठीक है. एक मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट होना चाहिए जो एंड डिफेंस प्लानिंग कमेटी होना चाहिए फॉर बेटर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन. एक बाई पार्टीसन्स कंसेंसस होना चाहिए, बाई पार्टीसन कंसेंसस होना चाहिए, बिल्ड क्रॉस पार्टी एग्रीमेंट्स on core securities policies, insulating them from electoral politics.
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग हट के एक तुम्हारा बाई पार्टीज कंसेंसस होना चाहिए तुम्हारा अक्रॉस द डिफरेंट पार्टीज, ठीक है, जो कि बिल्ड करे क्रॉस पार्टी एग्रीमेंट्स ऑन कोर सिक्योरिटी पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिसीज, कोर सिक्योरिटी पॉलिसीज, इंसुलेटिंग देम फ्रॉम द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग हट के। फिर थर्ड है तुम्हारा पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, fosters citizen engagement in national securities through camping, thereby creating a supportive domestic base for tough decision, ठीक है। विजन अलाइनमेंट integrates security goals with development objectives as envisioned in India at the rate 2047 to maintain long-term strategic focus. Vision alignment integrate security goals with developmental observations as envisioned in India at the rate 2024 to maintain long-term strategic force. Such measures will ensure that political will is not merely reactive during crisis but proactively shapes India's security postures. Political will in the bridge between policies, intents, and tangible actions in the realms of national securities. It ensures that strategies are funded, implemented, and adapted to evolving threats in an increasingly multipolar world where artificial intelligence driven warfare, cyber attack, and Indo Pacific tensions are redefined security uh, paradigms, security paradigm, ठीक है, पैराडाइम, ठीक है, जी यहाँ पर साइलेंट होता है, ठीक है, पैराडाइम में जी साइलेंट होता है, याद रखना। इंडिया लीडरशिप्स मस्ट इनहेबिट्स अनयील्डिंग रिजॉल्व। महात्मा गांधी ने भी यही बोला था कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल, ठीक है। जो स्ट्रेंथ जो होता है वो फिजिकल इज नॉट केम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम द इनडोमिनेटेबल विल को हम लोग डोमिनेट नहीं कर सकते, वो इनडोमिटेबल है, ठीक है। फॉर इंडिया टू इमर्ज एज अ ग्लोबल security anchors, its leader must couple strategic foresight with political determinations, ensuring peace, stability, prosperities for both nations and wider world, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब ऐसे को ये एक बार देखो, उसके बाद अपने खुद लिखो और फिर आके वापस चेक करो कि क्या क्या तुमसे छूट गया, क्या क्या नहीं छूटा, ठीक है। खुद से जब तक नहीं लिखोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए खुद से लिखो। चलो बाय।